જામનગરની શ્રી મોટી હવેલીમાં ગાદીપતિ પુષ્ટિ સિદ્ધાંત સંરક્ષણ શિરોમણી મહાકવિ પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી 108 શ્રી હરિરાયજી મહારાજની આજ્ઞાથી પરમ પૂજ્ય ગોસ્વામી શ્રી વલ્લભરાયજી મહોદયની અધ્યક્ષતામાં પૂજ્ય રસાદ્રરાયજી તથા પૂજ્ય પ્રેમાદરાયજીના સાનિધ્યમાં જામનગર વૈષ્ણવ સમાજના પ્રમુખ વજુભાઈ પાબારી સહિત વૈષ્ણવોની ઉપસ્થિતિમાં એક બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં તાજેતરમાં કાશ્મીરના પહેલગામમાં થયેલ આતંકવાદી હુમલાને વખોડી કઠોર નિંદા પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો। श्री मोटी हवेली जामनगर ट्रस्टनी वैष्णव संप्रदायना भाईओ तथा बहनों आजनी आ सभा में पूज्यपाद गोस्वामी श्री वल्लभरायजी महोदय श्री उपस्थिति में एवं पूज्यपाद गोस्वामी श्री रसाद्ररायजी महोदय श्री पूज्यपाद गोस्वामी श्री प्रेमाद्ररायजी महोदय श्री उपस्थिति में आ शोक ठराव पारित करवा माटे एक सभा आपणे एकत्रित भेगा थया छीए। आज रोज आ सभा में पहलगाम प्रवासन स्थल काश्मीर में तारीख 22/4/2025 ना रोज आतंकवादियों द्वारा निर्दोष प्रवासी पर जो हुमलो कर्यो छे तेमां 28 प्रवासीओनी जे निर्मम हत्या करवामां आवी छे। आवी बर्बरतापूर्वकनी फक्त हिंदू सैलाणीओनी ओळख करी अने हत्या करी समग्र जनसंख्याने हतप्रत करी नाखी छे। आ समग्र मामले जामनगरना समग्र वैष्णव समाज खूब ज आघात अने दुखनी लागणी अनुभवे छे। प्रभु आ तमामना आत्माने शांति अर्पे, श्रीजीना चरणोमां तेओने स्थान आपे અને પરિવારના દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ આપે તેવી લાગણી વ્યક્ત કરવામાં આવે છે। સરકારશ્રી દ્વારા આ બાબતે દોષિતને કડક સજા થાય તેવો અનુરોધ કરવામાં આવે છે। ઉપરોક્ત ઠરાવને રજૂ થતા સર્વમતે બાલી આપી અને સરકારશ્રીમાં દોષિતો ઉપર પગલાં લેવા માટે વૈષ્ણવ સમાજ તરફથી અપીલ કરવામાં આવે છે। આજ રોજ વૈષ્ણવ સમાજના પ્રમુખ ઉપપ્રમુખશ્રીની હાજરી તેમજ सर्व वैष्णव भाई बहनों की हाजरी में जामनगर वैष्णव समाज द्वारा हमणाज जे पहलगाम में प्रवासीओं ने खास धर्म जोईने अलग पाड़ीने जे आहत करवामां आव्या अने मृत्यु थई ते बाबते जामनगर वैष्णव समाज अत्यंत शोक साथे ए प्रत्येक आत्माओं ने शांति मळे तेवी प्रभुना चरणों में प्रार्थना करे छे। तेमज आज हिंदू समाजे हवे जागृत थवानी जरूर छे। जो भारत जेवा देश में मात्र हिंदुओं आ स्थिति थाय ते आ देश माटे अने हिंदू समाज माटे खूब चेतवा जेवुं अने सजाग थवा जेवुं छे। अमे खास अपना भारतना प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी तेमज माननीय श्री अमित भाई शाह ने खास अमे अनुरोध करशुं कि आ बाबते आतंकवादियों तथा एमना पोषको रक्षको ए बधाने बराबर प्रतिक्रिया अने पूरेपूरी एमने सजा मळे तेवो प्रयत्न करे अने कठोर प्रयत्न करे ताकि बीजी वार कोई हिंदू समाज तेमज अपना भारत सामे आवी गलत दृष्टि न करी सके। अमे सर्व आत्माओनी शांति माटे प्रभुने प्रार्थना करीए छीए अने कठोर निंदा प्रस्ताव वैष्णव समाज तरफथी अमे आजे प्रस्तुत करी अने कलेक्टर श्री पासे पण ए रजू करशुं। सचोट समाचारों सौथी झड़पी मेळववा माटे अमारी चेनलने सब्सक्राइब करो।